call my PM and then call the police or call somebody to do this. No, it is not that way. It is an economic problem. You have to give it an economic solution. And when we talk of economics, it becomes financial. It is all about money. 2 plus 2 should make 4. So the railways and the finance department needs to look after those. That is the problem. Actually, this is a managerial sort of problem. Finance committee. जो भी committee का एक बनती है किसी project के लिए उसको finance audit. Finance. Sorry, this is not an accounting issue. This is a managerial issue. This revenue collection in the railways. This is what I feel. The managerial काम. इसके accounts कोई काम नहीं. When I was there, when we were there in the railways, the chief commercial manager, he is responsible for revenue generation. Nobody else. And he has then put in place a system where the revenue is being collected. Elaborate time, maybe when we have a chance, we will look at it, the old one. Each ticket is accounted for. Each ticket at every station is accounted for. That amount of money in the olden days used to go in cash in a very elaborate system. Cash safes, cash bags, leather bags and all. And let me tell you, it was very, very common. And all the railway stations were centralized. The centralized system with money used to come to Lahore. Whether it was freight earning or when the banks started coming in, then things became easy and the stations started giving money to the bank. Then, because of the change in pattern of train operations, the smaller stations were done away with. They were simply operational stations. Even at the very smaller stations, for example, God forsaken Bakrala, a station, no train stops there. There was this ticket tube out there. And the man the station master used to indent tickets. हर सीजन में हर 3 महीने के बाद इंडेंट करता था, टिकट्स आते थे, पड़े रहते थे, फिर वापस चले जाते थे. एक प्रोसेस चल रहा. इसकी तरह there are hundreds and hundreds of stations on this system. Go towards Chor, go towards Hyderabad. For example, station like Parchi Jhaveri, बड़ा अच्छा नाम मुझे लगता है. Parchi Jhaveri में भी टिकट बिकते हैं. ट्रेन नहीं रुकती, टिकट आते हैं. To have that elaborate system, because of change in pattern of train operation, and patterns will change. They're dynamic, they're not constant. And then change in the pattern of freight trains would be different. Okay, I don't want to go into details, but then the amount money used to come to Lahore used to be counted and put in the railway scheme. For that simple process, the elaborate huge thing, this was under the chief commercial manager. The earning is coming down in real terms. In money terms, zyada hai. But in real terms, when you look at compare it with some maybe dollar or something else, so uski earning power. So that's another issue. So that amount we now have a financial advisor and chief accounts officer, and then he has his own deputies and he has his own senior officer, lamba elaborate system. Usi paise ko wo count. But I still feel it is still a managerial issue और ये CCM का काम है, इन सबको बाहर निकालना चाहिए. और इसी तरह बहुत सी चीजों में हावी हो गए accounts. That's another that. But है फाइनेंस का काम है. फाइनेंस का बंदा पाकिस्तान सरकार में अकाउंट्स के लोग आप लोग को फैसला करना. I don't know whether I talked about these issues. पहले कहीं आपसे बात हुई. So, for example, here now these are examples I want to bring you down to economics. Black marketing of tickets. It is an issue which has always been there, especially at Karachi, especially at Lahore, at bigger stations.
There's now, where's the economics in this? It is a very simple economic issue. What we do is, I used to be in Karachi as a divisional commercial officer. So at that time, we used to have these magisterial powers. So, the black market was there now. What do you do? Tell the law. Their magistrates are put the law. Then you go and raid people and black market. We used to go and raid hotels and everything. Now, this is a simple economic issue of what? Of supply of tickets, supply of seats, and the demand for those seats. There is a huge demand for those seats to limited hand, scarce hand. So people are willing to pay more for that service that we are providing. That seat, reserved seat, they are willing to pay more. Now, since we are government, we have fixed the price of the ticket. There is no system which, like the airlines, the dunya mein, of course, the airlines were also like us, but they changed. More dynamic pricing. It depends on the demand and supply or later of that. Demand ज़्यादा होगी, price बढ़ जाए. अगर आप if you want to go, you have to travel. You pay for it. As soon as the demand comes down, the prices come down. So why can't it happen on the railways? Again, why? Because of our mindset, government, sarkar, federal government. I had one time, Shahid Khattak Basi sahab, this is a very pretty great. Not happy to implement. And I was out of the railways, I was heading CPAC. Okay, why can't you do it? I was there for the long debate, I couldn't tell him. That's a basically something. Because now the CPAC ahead of leaking. So, demand, and what is economics? It is demand of a certain good or service. It is the supply of that service or good and related price. So, particularly तो like marketing है सर ये तो management और check and balance में ये economics का इस तरह economics ये है कि देखो पैसों का मसला है कि आप पैसे supply demand का मसला है. You don't have that capacity of increasing your trains, or you do not have the capacity of increasing your trains at a certain time where the demand is very high. When the demand is very high and the supply is limited, people are willing to pay more. So why can't we have a mechanism where the government takes that cut off? जो black market price है, वो हम service को the passenger is paying it as a service to the coolie or to that black market of the bar shop. What he has done is he has gone to the reservation office, maybe in connivance with the reservation people, and purchased these tickets in advance and put them in stock. He knows very well that this ticket will be demanded on this day of travel, and there will be a huge demand for it. And if I have paid 100 rupees for the ticket, there will be people who would be willing to pay 130 rupees for it. Willingly. Now what happens in the black market is that this 30 rupees that the passenger is willing to pay, anyway he is willing to pay, money has come out of his pocket. He has to travel. Now this 30 rupees of black market, this goes into the pocket of that person who has already invested in that. It doesn't come to the government. सर इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप जो टिकट बेचें उसको सीएनएससी वगैरह नाम से उसको अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. क्यों सीएनएससी ले? Why? वही ट्रेवल करें जिसको टिकट बेचा है. So what? Let's say आप मैं ले लेता हूँ, he travel, so what? Except for passenger security. From the economic point of view, it should matter.
ब्लैक मार्केटिंग को समझ आएगी। ब्लैक मार्केटिंग वो 10 काफी डेढ़ साल का नहीं किया मैंने। वो शनाख्ती कार्ड के उनके पास पूरा प्रबंध होता है, वो आपको दे जिसको दे रहा है वो भी तो मिला हुआ है ना। बुकिंग क्लर्क है। क्या काम है? I have stayed 3 years in Karachi, 5 years, sorry. सर इसमें इशू The क्या है? booking clerk is a big game. At that time, when my pay was maybe 8 to 10,000 rupees, one booking clerk would earn more than that in a day. Sir, वो 10 रुपए होता है। So ये black market. If we have a system where that demand for that ticket is met from the system, he pays more. If he is willing to pay 130, he should pay 130 to the railways. And this is what is happening all over the world in airlines. And same this is not only true for railways. Now, don't think that first done the Delhi. What I am saying is that premium of black market should go to the government. There should be a system. Number one. So it is an economic issue. एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाते हैं? पकड़ लो, आओ यार पुलिस वाले को बुलाओ, एसपी साहब की तनख्वाह दो, 10 उसके साथ गार्ड्स होंगे, 10-12 मजिस्ट्रेट के साथ होंगे, who pays for it? So you are adding to your cost, और वो सारी चीजें ड्रग्स नीचे गिरते हैं। और ये क्या है? आप एक सिस्टम बना रहे हो, you get the premium for this demand. ये सिर्फ it is not here only. Wimbledon for example, tennis, अभी ब्लैक मार्केट। स्टूडेंट्स जाते हैं, लड़के जाते हैं, पहले टिकट they buy the tickets, then they stand on the streets and they pay, you have to pay for it. Gaddafi Stadium, everywhere. So these are basically, but when you look at it from Gaddafi Stadium, क्या होगा? पुलिस को बुला, वो लाठी चार्ज, दराज मार रहे। वो ये एम्प्लॉयमेंट है ना, लोगों के पास पैसे जा रहा है, but why that service being provided, that match is a service that and the cost of that stadium, तो किसी एक बंदे ने दिया। You should not be bothered about the employment of others. You should be bothered about your own money. The railway should be bothered about its own money. और तो बताना हमारा काम है। सर ये इशू क्या है ब्लैक मार्केट में? और रेलवे को तो 100 की टिकट बेची है, वो 100 रुपये आगे कर 100 नहीं है ना, गलत किया रेलवे ने, उसको प्राइसिंग गलत की। मैं ये कह रहा हूँ, it is an economic issue of supply and demand. If the demand is there, people are willing to pay, the railways should get that amount. सर ब्लैक वन जो 100 is not the actual amount. 100 is a subsidized amount. 150 पे बेचते हैं, ब्लैक मार्केट वाला 150 का 200। So 200 के अगर if the person is willing to buy it for 200, why can't the railways get 200 or maybe 180 for it? हाँ? तो वो कितने कर देगा ब्लैक मार्केट? नहीं होगा। फिर there's a limit. वो this is now all economics. I can't go to supply demand curves. तो बड़ा there's a limit to the paying capacity of the person. वो एक equilibrium कहते हैं उसको, तो उसमें ना जाए वो बड़ा लंबे काम। ये तो किसी की मजबूरी है, ना जाए फायदा उठाना। कोई मजबूरी नहीं, क्या मजबूरी? मतलब उस बंदे को जाना है तो हम उसको, जी तो जाने तो ब्लैक मार्केट में दे रहे हैं। आप कराची जाए ना, लेट मी टेल यू, the system of our reservation, the entire system of our reservation at Karachi at one time was engineered in a way, not by purpose. Not by purpose. मैं नहीं कह रहा कि हमने किया ये सब, but it was not engineered in a way to facilitate the passenger. वो तकलीफ में बैठा होता था। Then I did, I'm talking of 1989। मैं नया हार्वर्ड से आया था, मैंने आया, what the hell is going on? When I looked at that study, when I did my own study, I looked at the average passenger वो लाइन में आता था, and the system was, now this is actually common sense, but it is economic common sense. और मेरे से पहले
20-25 साल ये चलता रहा, it was good enough. अब आपने बात छेड़ दी, बट दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स तो और रेलवे है ना, so let us then discuss it so that at least you get a feel of. Used to call it window. Huge long counter, 10-11 windows. Nice, no, good place. आप आए, you want to go to from Karachi to Lahore, and you have made up your mind while sitting at your house before even starting for the railway reservation 2-3 days ago. You have made up your mind that I will go to Lahore in Karachi Express. Now that is your choice. Okay? You came all the way from Nazmabad in a taxi or whatever, and आपको कहा कि जी कराची एक्सप्रेस में मैंने जाना है, ये कराची एक्सप्रेस है, ये खैबर मेल है, ठीक है, ये 7 अप है, ये 3 अप है, लगे रहो, ये विंडोज. Now you have made up your mind that I will go in Karachi Express. What now? This is what my research told me. Of maybe not को महीने में नहीं बैठा रहा कि दूरबीन लगा के बैठा था. Just a few days took me. Karachi Express, you come and stand here. Sorry, you come to Karachi Express and you find that there is a long line here of maybe about 20 people. You are the 21st man here. On the average, this would take, let us say, a very efficient here. It would take at least half an hour for this man to reach this place. This man, generally, when I did that, sir, he would say, "Ji jagah nahi." Jagah क्यों नहीं? Because there was a demand for Karachi Express tickets selling चली गई. और अगर है भी, let us say, when I found out, so every person who wanted to travel to Lahore, Karachi Express was तो जगह नहीं मिली. Now he would look for a second option. Yeah, कौन सा तेजगाम है first. So he would get out of line here, wasting 30 minutes और 30 में बड़ा काम कर रहा हूँ. गर्मी में आप जाए ना, वो धक्के लगे जो आपको पता चलता है. So he would get out from here, cross all this and stand in line for तेजगाम here. यहाँ भी already 20 बंदे पहले थे. पहुँचते पहुँचते इधर आता था, जी जगह कोई नहीं खत्म हो. In a certain class, let us say स्लीपर में आपको जगह चाहिए, स्लीपर की लिमिटेड क्लास. ट्रेन में तो पूरा स्लीपर नहीं था. There were maybe 40 seats or 50. He would say नहीं है. Now, since you had to go to Lahore, so you would come here and have a look at Karakoram or whatever, stand in line. So on the average, every person would get a ticket after at least the 4th choice of his train. 4th choice of trains. Now 30 minutes, 31.5 hours lost of very valuable time of a person जो business कर रहा है, कोई नौकरी से आया हो, किधर आया. Let us say इसको यहाँ पे, this man, you know what he would tell him? यहाँ जी जगह है, टिकट ले. Believe me, ये ऐसी हुआ, ऐसे ही था. टिकट लिया, टिकट लाओ. रजिस्टर होते थे ना जमाने, कंप्यूटर नहीं थे. टिकट किधर से लाऊं जी, वो किधर देखता था. ये बेचारा यहाँ से उठता था फिजिकली, बिल्डिंग के इर्द गिर्द जाके, वो उधर जाके, इधर से जाता था इधर बुकिंग क्लर्क बादशाह बैठा था. वो रिजर्वेशन वाले थे, ये बुकिंग क्लर्क. और 4-5
इतने इधर से लेके ना इतना बड़ा इधर तक, इसको टिकट ट्यूब कहते थे। उसमें लाहौर का टिकट, उसमें नौशहरा का टिकट, उसमें नवाबशाह का टिकट, उसमें हर किस्म का टिकट उसमें अवेलेबल। ये बेचारा बंदा कहते थे कि जी मुझे टिकट चाहिए लाहौर का स्लीपर का, रिजर्वेशन कर दी है, हाँ सर ये चिट दी है उसने, वो उसको दे के लाहौर का टिकट इतने पैसे दे दो, 410 रुपीज़ है, 420 ले लेता था उससे, वो 450 देता था तो 10 रुपए वैसे ही वो शुक्र करता था कि यार 10 रुपए कौन गिनता है, निकल जाता था। नाउ दिस मैन वाज सेलिंग हंड्रेड्स ऑफ टिकट एवरी डे, तो मल्टीप्लाई करें 10 तो मैं बड़ा, आई एम बीइंग वेरी वेरी मॉडेस्ट, 20-30 रुपीज पर टिकट की चार्ज करें। और लिटरली ये सारे बदमाश, फलाना साहब तो फलाना साहब, एक्चुअल रेसलर भी था उसमें, और मैं इतना छोटा सा, ये यहाँ ये सर लेटर से एक और एरिया को दे रहे उसको। नाउ दिस मैन थिंकिंग कि जी मैंने टिकट ले लिया, वो कागज उसको दे देता। Half of these people, or maybe 20-30% who did not know, they would go home. And when they turned up after 15 days for the train, they would realize मेरी तो बुकिंग है, रिजर्वेशन की। अगर उससे पूछते कि आपने जब टिकट लिया था एंट्री कराई, तो यहाँ से प्रोसीजर वाज कि इधर से ये टिकट लेकर he would again come to this gentleman here and stand in line again here. वो तो नहीं छोड़ते थे इसको, ये कहते जी मेरे पास टिकट है, वो कहते हैं जाओ यार अपना काम करो पीछे आ। तो उसको धक्के देके ये पीछे खड़ा हो गया, टर्न आई उसको कहा गया, तो ये बड़ा जीत जाता था कि 2 घंटे में इसको टिकट मिले इन द 3rd और 4th ट्रेन ऑफ हिज चॉइस। अब मुझे बताएं ये कौन सा इशू है? When you look at it from the management point of view, तो बस ठीक है, you know. But when you look at it from passenger facilitation, and then you look at it economic, क्या मसला? मैंने उसका आसान हिसाब क्या लगाया, और मैं बताऊंगा, आप कहेंगे यार ये तो बड़ा आसान है, लेकिन बात ये है कि ये कैसे, why not 20 years ago, why not 15 years ago? When you started thinking in your house that you want to go to Lahore, you want to go, what was your first thing? You wanted to go to Lahore. Your train choice was the second choice. Pehले you wanted to go, आपके पास बस भी थी, आपके पास जहाज भी था, then you said okay I'll go in a train. ठीक है? And then you said कि train में which is the best train? You said Karachi Express and Karakoram Express, whatever. So what I did was, this man is going to Lahore. Why should he change all these lines, and why should he go from there and there? If there is a train going to Lahore, he should get a ticket. तो वन विंडो ऑपरेशन उस जमाने में नहीं थी, बड़ा बात थी वन विंडो ऑपरेशन 1989 में, बड़ी बात। What I did was simply यही विंडोज वो भी बंद है, उसको खत्म किया। मुझे इतना मैं कह रहा हूँ ना, इधर तक टिकट ट्यूब से इधर तक, आई विश वो मेरे पास होता, मैं बोलर में रखता उसको, होगा पड़ा होगा उधर, उसको खत्म किया। इतने टिकट ट्यूब बनाए छोटे छोटे, और इस विंडो के ऊपर, ये जो विंडो है ना, इसमें 2 बंदे बिठा दिए। कंप्यूटर नहीं है बाय द वे, कंप्यूटर नहीं था। और ये बुकिंग क्लर्क है, ये रिजर्वेशन क्लर्क है, ये बुकिंग क्लर्क है। और किया क्या, आई जस्ट चेंज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस टू डेस्टिनेशन वाइज रिजर्वेशन। आपने लाहौर जाना है ना, आप आए, क्या किया मैंने लेट अस से, आई हैव फॉरगॉटन नाउ, बट से फ्रॉम रावलपिंडी टू पेशावर, ये एक
एक विंडो. You want to go to Nushaira, you want to go to Texla, you want to go to Khattak, you want to go to Peshawar, come and stand in this line. From जहाँ पे रश था, फॉर एग्जाम्पल आई न्यू, तो एक सेक्शन मैंने बनाया लाला मूसा टू रावलपिंडी, एक बनाया लाहौर टू लाला मूसा, एक सिर्फ लाहौर, एक या दो, आई फॉरगॉट. नाउ दिस मैन यू केम, आप आए, आप इधर खड़े हो, उसी तरह 20 बंदे खड़े हैं, 30 बंदे खड़े हैं, इधर से आप आए आधा घंटा लगे इधर. इस बंदे, इस बुकिंग क्लर्क के पास सिर्फ उसको पार्ट का जो ट्यूब था उसको इतना छोटा कर, वजह जिसके बाद सिर्फ टैक्सा का टिकट, और टैक्सा कितने लोग जा, बहुत कम लोग जा, अटक के टिकट, नौशहरा के टिकट, maybe 1 or 2 more स्टेशन जागीरा और पेशावर. आपने फॉर एग्जाम्पल पेशावर जाना है, आप इधर आके खड़े हो गए, जी मुझे 1 अप में जगह दे, जी जगह नहीं, अच्छा जी 11 अप में दे दें, जी जगह नहीं, अच्छा यार वो उसमें दे दें, खुशहाल खान हटक में, हाँ जी उसमें जगह है. इधर से ही आपको टिकट मिलता था, इधर से आपकी रिजर्वेशन होगी और आप घर से. Now where does economics come in? Economics comes in. ये 30 मिनट्स में आपकी रिजर्वेशन होगी, घर चले गए, आराम हो गया. You have saved 1.5 hours of all these thousands of people who are coming every day. आप उसको मल्टीप्लाई करें into man hours, multiply man hours into उसकी एक वैल्यू है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह. So you, that is what it is. And secondly, you have earned a good name to the ladies. Yes. पर जब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में वो इतने तकड़े कंप्यूटर नहीं थे, उस पे उन्होंने कहा जी ये ऑरेकल है, फलाना है, जब हमने उस पर लोड डाला ना सारा, वो सारा बैठ गया ट्रायल पे. तो खैर फिर हमने यही किया कि ये काम सारा इधर ही बैठे बैठे डेस्क पे, लेकिन था डेस्टिनेशन वाइज. फिर ये जो ऐसा ऐसा डेवलप हुआ सारा, एंड सॉफ्टवेयर वाज गुड इनफ. अब आप अपने इससे भी कर सकते हैं. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स है. अच्छा, उसमें वो जो सिस्टम था, द इंटायर ब्लैक मार्केट वाज थ्राइविंग. आप लगे ना, वो जिसने टिकट फिर वहां से लिया है या कहीं से लिया है, आप पुलिस में जो हम सारा दिन ये पता नहीं कराची कैंट तो आप गए होंगे, कराची कैंट के सामने होटल है, सारा दिन होटलों में हम रेट करते हैं, होटल के कमरों में बैठे होते. सर ये मोबाइल ऐप में ये महंगा टिकट मिलता है एज कम्पेयर टू आप स्टेशन पे लिए उसमें. आई डोंट वेरी फ्री. मे बी उन्होंने सर्विस चार्जेस लगाए हो, पैक के कुछ चार्जेस लगाए. देखो, इफ द पैसेंजर इज विलिंग टू पे, इट इज गुड. और दूसरा कुछ तो सर डायनामिक भी है, अच्छी चीज चलना चाहिए, आगे चल. सीट अपनी चॉइस सिलेक्ट करना. और फिर मुझे मौका मिला जब 2006-7 में क्रैक्स में, बिल्कुल मैं बहुत सी चीजें थी. आई यूज्ड टू टिकट घर में पहुंचता, फोन टेलीफोन पे, बालाकोट जैसी जगहों पे, तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप सर्विस दे रहे हैं, दे, एंड पीपल आर विलिंग टू पे. ये देख लें. तो ये ब्लैक मार्केट, रेलवे पार्किंग फॉर द पार्किंग इज एनीवेयर, फॉर एग्जांपल एनीवेयर सदर में पार्किंग, आप इसको कमर्शियलाइज करें, इसको गिव इट एन इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ, मेक इट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड गिव इट एन इकोनॉमिक सॉल्यूशन. क्या है? चार्ज करें. व्हाई शुड वहां पे जमीन जो है वो ₹1 की हमने ली हुई है सिर्फ पार्किंग के लिए. टिकट से तो आपको आ नहीं रहे हैं, ₹50 का डेफिसिट दे रहे हैं, तो चार्ज द पार्किंग. somebody is willing to pay, let him. सिंगापुर में if you want to take your car inside the city, you have to pay through your nose. अच्छे तगड़े बिजनेसमैन नहीं जा सकते. अक्सर आप देखेंगे या मर्सिडीज होगी या कोई फरारी होगी या लैम्बोर्गिनी, वो पार्क होगी, अदरवाइज आम आदमी नहीं कर सकता. उन्होंने लिमिट कर दी है. इट इज एन इकोनॉमिक इशू. उन्होंने कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा किया. हमारा पुलिस वाला भी खड़ा होता, पैसे भी ले रहा होता, फैसिलिटेट कर रहा होता. तो ये what I'm saying is that these are, you should have this mind of understanding that these are economic issues which need economic solutions, not administrative. हमारा as public servants ये dilemma जो है ना, इससे निकले. Environment में I'll give you an example. I don't know whether I've already given it to you or not.
there was a city in the US. Their environment was being degraded. जो count था pollution का वो ज़्यादा हो रहा है. So the city mayor या city के जो elders fathers थे, they decided कि क्या करना है? It's a big issue. Environment they developed country. Why should there be pollution there? तो उन्होंने एक सर्वे कराया. उन्होंने एक सर्वे कराया. उन्होंने देखा कि ये सिटी है. सिटी के बाहर इधर एक इंडस्ट्रियल एरिया था. अब इंडस्ट्रियल एरिया में डेफिनेटली इसमें पोल्यूशन हो रही है. चिमनीज है, ठीक है, धुआं दे रही है. फिर एक तो ये फैक्टर था. दूसरा उन्होंने देखा तो देयर वर लिटरली सम hundreds and thousands of smoke cars which were emitting pollution. When they did that survey, then they found out that this pollution coming out of the cars is more intense and it is more lethal, and that was the basic cause. Now, as to go, चीज तो पकड़ ली. And we भी there हमारे तरफ पाकिस्तान की सरकार के लोग पुलिस को पकड़ो, अंदर करो गाड़ी, धुआं दे, मजिस्ट्रेट बुलाओ, अंदर करो, इसको बंद करो, ये करो, वो करो, एक और adding to the costs. What this mayor did was, of course not the mayor, but there must have been somebody. So they said, okay sir, for example, today is 2022. Also, sir, the life of a car is 5 years. Let us say there are some people who can't afford it, okay, they're 7 years or 8 years or maybe 10 years. So any car which is, say, let us say, the life is 5 years, any car beyond 10 years will not be allowed because these are uneconomical cars. These are technically not viable running technology. They consume more gas. उस ज़माने में उनको गैस गजलर्स कहते थे. ये V8 इंजन और शेवरलेट और व्यू पर जबरदस्त पेट्रोल खाते थे. वो लीटरों का हिसाब नहीं होता, गैलन्स का हिसाब. So what they did was that they said, okay, example 2022, they said, okay, 20, 0, 10, 10 minus करो कितना, 12. Any model, any car whose actual life is 5 years, the books. But we say, okay, 10 years, any car which is beyond 2012 model will not be allowed on the roads. And they did not do it. They did say that we will not allow them. So the very administrative action on here. What they did was, they found out the average price, the base price of these cars. इससे जो पुरानी गाड़ी थी, सर्वे में पता चला कि फॉर एग्जांपल उसकी the price of that was say $300. The mayor said, anyone who wants to sell his car which is beyond 2012, I am willing to pay him. The city was willing to pay him $500. Okay. And that means he is willing to take away that pollution from the city for $500. And he knew it was worth it. कि ये सिटी बेहतर हो जाएगी, सांस लोगों का बेहतर हो जाएगा, मेडिकल बिल्स कम हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी, बाकी चीजें कम हो जाएंगी. उधर मेडिकल के बड़े इश्यूज थे, एलर्जी, ये वो मसले. So now what he did was, he announced this, notified any person who wants to sell his car which is beyond 2012, come and we will give you that. Now this was another way.
What happened is, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जितने लोग थे अनएम्प्लॉयड जितनी दुनिया बैठे वो जाते थे आपके पास गाड़ी है इजी 20 कौन सा मॉडल है 2011 है कितनी की है यार मुफ्त ले जाओ मेरी पार्किंग ज़ाया हो गई मैं पार्किंग के पैसे दे रहा आई एम पेइंग फॉर द पार्किंग people were literally fed up but they didn't know what to do about it so he said okay give me $300 so this student gave you $300 or maybe $200 drove your car. What the mayor did was that he asked these people who were producing industry, they were producing different things. He asked them, okay, you buy pollution out of my city. And if you buy pollution out, why should they buy it? Out there, everything is very economic, very financial. Dollar के बगैर बात नहीं होती. Why should they buy it? Then he said, gave them an incentive that their pollution was also limited, restricted. So what he told them that, okay, if you buy 1 unit for 500, I will allow you to produce more and throw more pollution into the air. This pollution was not affecting the city because they had chimneys or वो बाहर जाते थे निकल जाते थे. So what these factories did was that they announced that we are willing to buy each of these cars for $500 cash. The student would come, buy this car worth $300, pay the person $300. The person would get rid of his old car. He would go drive the car to this factory here. He would be issued a small chit with $500. So in one day you could have even purchased 4 or 5 cars. So people made money out of it for pollution. So this is how even environmental issues can be dealt with economic solutions. वो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं? वो क्या करते थे? वो उन्होंने मशीन रखी हुई थी. वो ऐसे पूरी पता नहीं आपने देखी थी. बड़ी पुरानी मशीन. वो ऐसे इतना डब्बा बना दो. ट्रक डब्बा. मेरे को दिखाते थे कि ये एक गाड़ी ये 2 3 these are all the units we paid for and now that we have purchased 1000 units you will allow us to produce this much and throw this much pollution into the air. And the more they produce the more better. उन्होंने वहां से पैसे कमाए उन्होंने यहाँ से पैसे. So it is all a cycle economics. So this is just trying to tell you कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं you have to look at things in a different way. ओवरऑल एनवायरमेंटल इशू तो वही रहेगा ना सर. ये एनवायरमेंट से तो निकल गई. वो जो थ्रो कर रहे हैं इंडस्ट्री वाले वो भी तो It didn't affect the city. ये तो बाहर है ना सिटी. ओवरऑल आप दुनिया को छोड़ो ना. आप बड़ा नैनो इफेक्ट के हो. The mayor was only interested in his own city. Out there, through this issue. At that time, it wasn't a big issue. ये तो अभी ये क्लाइमेट चेंज के मसले हैं. उस जमाने ये बातें नहीं. सर अभी उनकी ये स्क्रैप यार्ड बड़े हैं ना हमको समझ नहीं आती स्क्रैप यार्ड. हाँ ये जहाज पड़े हुए हैं. लाखों में जहाज खड़े टैंक्स पड़े हुए हैं हर चीज पड़ी. मैं तो इसका कभी कहता हूँ कि अफगानी को छोड़ देना वो इससे इलाज हो गए. They'll be very happy to get their hands on this stuff. Now I will just give you concepts of economics. This is not an economics class. This is train operations, financials of train operations. But for that, जैसे मैंने ये अभी आपका थोड़ा सा ज़हन बनाया ना on economic issues or administrative issues or वो. So we are going to look at some concepts. अब economics is a huge subject which you can't learn in one course or maybe in one MS also. Maybe you do your PhD फिर भी समझ नहीं. It's so complicated. So it is part of a behavioral sciences. Behavioral sciences are those sciences. I don't know whether it's sciences or not, but predictable है. जहाँ पे where the human being comes into action.
he is involved. Wherever a human being is involved, it becomes a little unpredictable. But when you look at the bigger picture, then it is predictable. So behavioral sciences, economics, sociology, people dealing with each other, anthropology है, political science भी है, public policy भी है, ये बहुत सी चीजें हैं। ये अब public policy basically behavior के साथ डील करती है। तो ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि सारे हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी पूरी बिहेवियर को जो आजकल ड्रामा चल रहा है, जबरदस्त ड्रामा है। तो खैर as well as biology insofar as we, or we as humans, it is affecting everyone, especially economics आपको daily affect करती है. So economics is a social science that deals with very simple, I'll just make it very simple. ज़हन में रखें, human wants also. Frankly, I require a lot of things. आपकी भी बहुत ख्वाहिशात है. Everyone has wishes and needs. So, and they will never stop. You have one car, you want another car. You have a Toyota, you want a Mercedes. You have a Mercedes, then you want a Rolls Royce. Oh, the human nature is such. So, two things: unlimited wants and needs. But on the other side, the resources are scarce. Unlimited means. Whether they're natural resources or man-made resources, they're all limited. Or when I gave you the example of those seats, limited seats. The train is very limited. That is why the needs बढ़ी, requirement बढ़ी, demand बढ़ी. So economics is a social science that deals with how people organize themselves. You have to let go of certain things. क्योंकि आपके needs बहुत हैं, but you don't have that capacity themselves in order to allocate scarce resources, in order to produce goods and services that will satisfy the unlimited wants and needs. Really economics. Where do you get that balance? If you are good enough, आप improve कर जाते हैं. On the whole country level, we have been messing our economy. You can see. बहुत मुल्क हैं, they have done some really good things about their economies. अब चल रहे हैं, उनका अलग puzzle है, growth rates बढ़ी. So ये वो. Now little of definitions. Marshall, economics में बहुत बड़ा नाम है. He says economics is the study of mankind in the ordinary business of life. Business का जो इससे डाल दिया ना, in the business of life, dealing में. ये जो आप पढ़ रहे हैं, this university is also a service being provided. There is a cost to it, and you are paying for that service. So business of life, चाहे education है, whether it is health or whether it is transport or anything, this is the business. Even when I go from here to there, I have an option कि यार मान जाओ whether I should go there. Even when you are sitting with your parents, America में there are people who actually count the number of hours being spent with the parents in dollar terms. Because had I been somewhere else, I would have earned so much. हमारे ऊपर ये concept नहीं, but है लोगों. सर ये यानी कि जो पैसे वाले बंदे हैं उनसे पैसे लेना और उनको सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने को इकोनॉमिक्स कहते हैं. पैसे वाले कहते हैं, नहीं हम बेचेंगे जिसके पास पैसे होंगे, जो अनवांटेड जो अनलिमिटेड वांट्स उसके होंगे, बंदा सब्सिस्टेंस रह रहा है जंगल में रह रहा है, वो भी उसको भी इकोनॉमिक उसकी नीड्स हैं. वो जाएगा कि कुछ चीज़ लेगा जंगल से, अगर ज़्यादा ले लेगा जंगल खराब हो जाएगा. जरूरी नहीं, पैसा इज वन, इट इज अ कंसिडरेशन, प्राइस इज अ कंसिडरेशन. लेकिन हर चीज में देखो ना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. इधर पैसा है. सर पैसे से मुराद कोई भी चीज हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, कुछ हो सकता है. हमारे लिए भी हो सकता है. पहले जमाने में बार्टर ट्रेड होता था,
मैंने आपको गजल दे दिया, अभी मुझे टाइम, एनर्जी, मनी, ये भी बड़े कॉस्ट। वही जो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे इवन टाइम जो है इट इज काउंटेड एज रिसोर्स, एंड योर पेरेंट्स के साथ बैठते हो, कहते हैं यार मेरा बड़ा टाइम लगता है, ऐसे लोग रियली हैं। अब हम तो हैरान होते हैं, लेकिन अब व्हाट आर दीज, हमारी क्या बेसिक नीड्स क्या हैं? एवरीवन नीड्स फूड, एवरीवन नीड्स शेल्टर, एवरीवन नीड्स क्लोथिंग, ये बेसिक चीजें हैं। नाउ दीज आर नोन एज फिजियोलॉजिकल नीड्स। हर इंसान को ये चाहिए। You need to cover up. Why do you want to cover up? Because you want to get protected from the weather. सर्दी में आपको कवरिंग चाहिए, आपको चाहिए घर चाहिए, आपको बारिश से बचने के लिए फूड, शेल्टर, स्पेस, ये बेसिक नीड। इसके बाद भी नीड्स हैं, वो क्या है? डिजायर्स हैं, लोगों की वांट्स हैं, फैंसी आइटम्स चाहिए। एक बंदा कहता है मैं यार, उस दिन somebody told me, कहते हैं ये बंदा टीवी पे आया था, उनका घड़ी जो पहनी वो 60 लाख रुपए की है। मैंने कहा ऐसे जी 60 लाख की घड़ी। फिर उसने मुझे गूगल करके निकाल के कहते हैं 60। अब फॉर दैट मैन दैट इज हिज वांट्स एंड डिजायर। उसने पता नहीं कैसे किया होगा, मे बी आई एम श्योर ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट 60 लाख की घड़ी पहनी। आई वेंट टू ऑस्लो, नॉर्वे, तो this guy shares up from Lala Musa. He is very filthy rich, frankly. When I was coming back to airport पे जाना, तो मैंने शेर साहब ने कहा फटक साहब मैं आपको छोड़ कर, वजह ये थी वो क्यों मेरा बड़ा हो गया था। मैंने उसको कहा यार एम्बेसडर हमारा है, ये जा रहा है, मैं पूरी दे दिया। फिर एम्बेसडर ने कहा हमारे सोसाइटी उसके कम्युनिटी के बहुत बड़े काम हैं, चले जाओ। आई वाज हेडिंग NMC डेलीगेशन, वो तो बहुत मर्सिडीज है, मैंने लाइफ में नहीं देखी, व्हाइट कलर था, ब्रांड न्यू। तो मैं खैर पर बैठे थे उसको देख लो, तो खैर जाते जाते फिर उसने कहा ये और भाई मेरे साथ क्यों इतना अच्छा लगाओगे ना, वो लाला मूसा का था, और लाला मूसा ने उसका रेलवे का ताल्लुक था, और मैं उस जमाने में BS रेलवे हट गया था, फिर मैं NMC में चला गया। तो he knew me by name, उधर जाता है, और मैं भी कोई छोटे मोटे काम भी कराए, और ये जो बाहर रहते हैं ना, इनको ये बड़ा होता है कि छोटा काम मैंने करा दिया, बड़ी दोस्ती। तो खैर वो मुझे ले जा रहा था, तो गाड़ी में अप्रिशिएट कर रहा था, वो कहता है देखिए आपने, अब वो सेट बनाया तो बैठा समझ नहीं, कहते हैं कि ये घड़ी जो है ना, ये इस गाड़ी से महंगी है। Actually, I do believe तो ऐसे लोग हैं। तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है। ज्वेलरी का औरतों का होता है, कॉस्मेटिक्स है, ब्रांड्स हैं, फलाना ब्रांड का है, फलाना ब्रांड है, होता है लोगों को बड़ा इनहेरेंट कीड़े होते हैं। बड़ा स्क्रीन होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। जब पैसे हैं तो करें, मतलब इसमें आई नॉट सेइंग ये बुरी बात है, ठीक है, बट when you look at the values that we have and Islam and all that, it is in direct conflict with the American way of doing things. वो कहते हैं यार आपके एक गाड़ी है तो दो लो, अब दो होनी चाहिए। And the number, let me also give you a figure which maybe अभी बदल गया हो, but a few years back, the number of car owners in the UK, in Britain, was equal to the number of 2 car owners in the US. जितने अमेरिका में यूके में 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी थी जिसके पास, उतने बंदों से ज्यादा अमेरिका में 2 गाड़ियां। तो ये पता चलता है था। खैर, wants and desires। अच्छा, बाय द वे, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो रिपीट की होंगी, बट वी आर लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट्स ताकि वो इकोनॉमिक इश्यूज आपको पता चले। Then in economics you will be coming across the free market economy, और ये जो हमारे एडम स्मिथ
he's a big economist. He was a big economist. He propagated the free market economy would lead you to economic growth, it would lead you to prosperity, it would lead you to richness, it would alleviate poverty, khatam kar dega. This is his thing. How far he was successful, that we can see from the economics. So this propagated, this is known as capitalism, where the private people own the capital. The private sector is very dominant. They produce things and they have control over the means of production. Competition, consumer is the king, whatever he wants. Whatever I've been talking of, ye American ethics hai. Demand drives the supply. If there is a demand for things, you give it. Why not? And then Adam Smith says that once this kind of a system is built up, don't bother about the poor people. He says the poor people will automatically be elevated in the sense that they will come out of the poverty. Why? Because of the trickle-down effect of the economy. Once you go deep into it, at times people don't believe in the better need. But in the Western economies in the US, उन्होंने prove कर दिया नहीं ऐसा है. And that is why China then went on to left its own kind of economics or adopt years. Then एक दूसरा है controlled economies. इसको socialism भी कह सकते हैं. Now here is they believe in controlling the economy, the government intervenes. In that, Adam Smith says, no, the government should just be there as a regulator, as an umpire. These people say, no, everything is owned by the government. And Karl Marx, he went to the extent, they said that there should be no private property. Nobody should own a house, nobody should have a car, and nothing like that. It will all be owned by the government. The government will decide who to give it and how to give it. No one will have land. Everyone will own land. And we will have collective farming or whatever that was, जो कैसे collapse किया उसने. China मैं बताता हूँ थोड़ा. Now China is a different ballgame completely. China was a completely socialist communist state where the entire control was of the government. But the actual revolution in the Chinese economy was that this communist mindset changed completely within 4, 5 or 10 or years. Deng Xiaoping के ज़माने में state-owned से निकल के they went into corporate and they went into private and they went now China में कोई चीज़ government control government का है. It's a hybrid kind of very strong government controls but capitalism. State-owned capitalism कहते हैं. State-owned capitalism. Government का बड़ा control. But the way they have done it really वो पता है हैरान होगा. दिमाग को चेंज करना बड़ा मुश्किल था. So that is the actual revolution in China. Mao Zedong का और revolution. So that was a physical kind of a revolution. उसने चीजें की, मार कुटाई की, ये वैसे ही लोगों को चेंज किया. अब the average Chinese, the way I see them, is more capitalist, market oriented than the American. Young बच्चे डॉलर के पीछे, पैसों के पीछे, इकोनॉमी चल रही है, थ्राइव कर रही है. फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमीज, केन्स आया, जेएम केन्स, he said no, capitals, even if you are a capitalist economy, market economy, government has to intervene. And he was proved right. ये अभी कुछ अर्सा पहले, if you remember, there was a big crash in the US, and the government had to intervene. I think it was Obama, it was 89 में था, it was Obama time. And then the Obama government had to borrow money from the Chinese. I think it was $1 trillion. And 6 billion मिला, IMF से 3 साल के. $1 trillion उनसे लिए और उनको ट्रेजरी बिल्स कागज बेच के उनसे पैसे लिए गए. और वो पैसे फिर उन्होंने बैंक्स में रखे और बैंक्स को सहारा दिया. So that is how the government intervened, and so he was proved right. So mixed economies come over. But
कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगेन वेरी इंट्रिकेट थिंग्स फ्रेंकली। हमारे एक प्रोफेसर था हार्वर्ड में, यंगेस्ट प्रोफेसर एवर, आई थिंक वाज 34 ईयर ओल्ड प्रोफेसर था। जब भी उसको बात करता हूँ उसका नाम याद आ गया। उसके लिए लिटरली जहाज खड़ा होता था, वो एक दिन मेक्सिको जाता था, अगले दिन फिर वापस लेक्चर की, फिर वो पता चलता है कि वेनेजुएला चला गया, फिर वापस आ जाता है, फिर से पता चलता है अफ्रीकन कंट्री में चला गया, कभी ईस्टर्न यूरोप चला गया। वो इनको ये इकोनॉमिक्स आता था, तो दैट वे बड़ी इज्जत वाली चीज भी है। सो इकोनॉमिक्स इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप जो प्रोड्यूस जो कर रहे हैं किधर देंगे, किसको देंगे, वो डिसाइड कि इसकी एलोकेशन कौन करेगा। और ये डोंट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग मेंबर्स, ऑफ कहां पे जाएगा, बलूचिस्तान में आप देंगे कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, आपका जो मोटरवे बन रहा है, पैसे खर्च कर रही है, शुड इट गो थ्रू बलूचिस्तान, शुड इट गो थ्रू पोर्ट सैंडमैन रोड में जाए, डिमांड पे डिपेंड करता है, डिमांड होता है, इकोनॉमिक्स में डिमांड है। बट एट टाइम्स the government has to decide. ठीक है, डिमांड तो नहीं है, they won't pay for it, but can they be allowed to rot in that poverty state? Then the government intervenes. And at one time in the 50s, Ayub Khan के ज़माने में, the government decided to have an organization by the name of Pakistan Industrial Development Corporation. PIDC ने कारखाने बनाए, पता कहाँ बनाए? दाऊद खेल, कुंडिया निवाली के पास। वजह यानी बैकवर्ड इलाका इधर कारखाने, और कुछ अर्से तक वो चला बड़ा अच्छा, लेकिन वो डिमांड सप्लाई के चक्कर में अभी काफी चीजें लेकिन चल रही, तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। फिर कंजम्पशन, द यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कंजम्पशन इज द अल्टीमेट एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन खा रहा है? मैं आई वांट अ पावर हाउस and we get into political issues. Balochistan says the powerhouse is on the KP says is on the okay. We say we should have it on the border of KP and Balochistan. You make both of them happy. Let us say you have it somewhere near Job or somewhere near Tank or BI Khano se लाके निकल. ये दोनों करीब हैं. Now who's going to consume that power? Plant के लिए बिजली है 1200 megawatts, 1400 megawatts to the rating. Technical issue. Technical demand supply. आपके जितने पावर हाउसेस हैं, इनकी तमाम की सप्लाई आ रही है फैसलाबाद और गुजरात, सियालकोट। अब मैं कहूँगी कि पंजाब में यार पंजाबी खा गए, that's another not. तो ये इश्यूज हैं। इकोनॉमिक्स और तरीके से देखता है इसको, फिर हमारे बीच में पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज दैट यू कांट से उसको नहीं। आप मानेंगे नहीं, नॉर्वे में एक घर बनाओ ना पहाड़ के ऊपर, पहले तो इजाजत नहीं देते उसके ऊपर बनाने, और अगर वंस द परमिशन इज गिवन द गवर्नमेंट इंश्योर्स के लिए इट विल हैव अ रोड, प्रॉपर रोड, तो रोड विल हैव प्रॉपर ड्रेनेज, उस पर लाइटिंग होगी, उस पर हर चीज होगी, और वहां पे उसके पास सीवरेज भी होगा और म्युनिसिपैलिटी उसको प्रोवाइड करेगी। मैंने कहा कि यार क्या, but they have the money, they can afford it, कोई आदमी की because we frankly we can't. तो ये then you have to see किस काम में सप्लाई डिमांड का चक्कर है, and draw a line very carefully so that you don't annoy. Sir, you need to understand public finance. सर ये जो अभी बात हुई है, इसके हिसाब से अगर कम्युनिज्म टाइप गवर्नमेंट होती है तो वो अच्छी होती है, क्योंकि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो जहाँ पे डिमांड होगी वहीं पे चीज वो फेल होगी, दुनिया में फेल होगी। They have not done anything. यहाँ पे कहाँ लस्सी पीने वाले नहीं कर सकते। मार्क्स और लेनिन आए थे, उन्होंने पूरा दुनिया का सर्वे किया, तो जब इस इलाके में आए उन्होंने देखा ना चरपाइयों में लोग बैठे होते हैं, सो के हो गया, उन्होंने लस्सी पी, उन्होंने अगर कम्युनिटी नहीं कर सकते। वैसे जोक कर रहा है ना, बस आप छुट्टी करते हो क्यों सही में
अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ स्केर्सिटी, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट में स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्सिटी के बगैर आगे नहीं इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आपने प्लानिंग कर रही है स्केर्स रिसोर्सेज। $6 बिलियन आपको दिया हुआ है IMF ने 3 साल के लिए, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ? वहाँ $8.2 बिलियन का MN1 भी है, आपने बलूचिस्तान में मोटरवे भी बनानी, आपको हर जगह स्कूल भी चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी भी अच्छी चाहिए, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसके $6 बिलियन वही है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? उधर कर्जे भी वापस करते हैं। तो फिर दूसरा फिर इसमें ये देखें कि जो मैंने एज ए सेड के रिसोर्सेज, फिर नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अल्लाह ने लैंड दिया हुआ पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त, ये प्रिविलेज फ्रैंकली, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है। Somehow we made up, वो आगे देखेंगे आप हमने कैसे मैच किए। ह्यूमन रिसोर्स, मेंटल, फिजिकल, ये भी मेंटल भी बहुत बड़ा रिसोर्स। ये जो इसके मसल्स हैं ना दिमाग के, ये भी बेचने चाहिए। ये मसल्स हम बेचते हैं, हजूर बेचते हैं कि नहीं? We should be able to sell this muscle. और ये दुनिया बेचती है, they earn a lot of money by using this muscle. हमारा ऊपर से खाली है तो बस वो लस्सी की वजह से। तो ये machinery is building physical health. Then there are factors of production. आपको प्रोड्यूस जब करना है तो किसी चीज से करोगे ना, लैंड आपको चाहिए, आपको लेबर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और कुछ पैसे आपको चाहिए कुछ चीज बनाने के लिए। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास हैं। Somehow कुछ तो डोमेंट है और कुछ मिसयूज में। थिंग्स प्रोड्यूस, उसको हम कमोडिटीज कहते हैं। जो भी चीज बनती है कमोडिटी, एवरीथिंग इज अ कमोडिटी। ये कमोडिटी है, सीड कमोडिटी, गाड़ी कमोडिटी, ये कमोडिटी, ये रिमोट कमोडिटी, पंखा कमोडिटी। टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल सर्विसेज। दूसरी चीज ये है कि सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो। ये चीजें सारी जो हैं ये टेंजिबल है, सर्विसेज इंटेंजिबल, आपकी एजुकेशन इंटेंजिबल, हेल्थ सर्विस इंटेंजिबल, टूरिज्म इंटेंजिबल। तो ये सर्विसेज और इस पर बड़ा पैसा है। बैंकिंग फॉर एग्जांपल इंटेंजिबल, सर्विस दे रहे हैं ना एंड दे चार्ज फॉर इट। तो दुनिया में सर्विसेज पे बहुत बड़ा एक आपका एसेट बनता है और ग्रोथ पता चलता है कि यहाँ पे पैसे बहुत है। प्रोडक्शन, एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इकोनॉमिक्स में रिमेंबर कीजिए चॉइसेस। America is America because it is a land, they say it is a land of opportunity. And it is a land of opportunity only because they have material choices. आपने ये कमीज पहनी है? When you go to the market, you will find in America there are about 20-50 other types of kamiz. They don't want you just live in one shirt. Okay, you buy 10 more. उसको चॉइस है, गाड़ियों का, घरों का, हर चीज का। इट्स द मोर द चॉइसेस द बेटर इट इज। तो जब मैं कह रहा था ना वैल्यूज का, इस्लामिक वैल्यूज का, तो जो हम कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये जोड़ा मेरे पास है, बस मैं 2-3 दिन के बाद धो लेता हूँ, फिर भी साफ रहता है। तो कहते हैं पागल बहुत सारे कारखाने बल्क पहनो फेंको, पहनो फेंको, कंज्यूम करो। इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स। पूरी अमेरिका इसमें चलती, डॉलर की तलाश। दूसरा, जैसे मैंने कहा चॉइसेस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एंड हाउ मच, कितना बनाएंगे। in Russia at one time जब कम्युनिज्म था and when the central Asian states were part of the USSR, तो आप मानेंगे नहीं, the entire Central Asia, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, some parts of Kazakhstan और अजरबैजान तक, self short of Ukraine, ये तमाम एरिया was nominated and ordered to produce cotton only. For years on end वो cotton grow करते थे और ये cotton जाता किधर? एक कारखाना इससे लाके textile मिल। This is how the central जो आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा
तो सेंट्रल इकोनॉमी के ये था, कारखाने कहाँ थे? यूक्रेन और मॉस्को, रशिया। So these poor people who would grow all the cotton that all the textile mills would run on, they would wait for the textile mill in Russia or Moscow or Ukraine, वो produce करती थी, करके बताते थे। तो जब I went to, जब ये नया नया independent हुआ तो went to उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, तो काउंटर पे एक दिन जुराबें आई और हजारों की जुराबें पड़ी, यार कोई और चीज नहीं मारता। तो 4 दिन के बाद जाते तो सिर्फ कमीजें पड़ गई। फिर कुछ दिन के बाद पता चल रहा है कि अब अगर अगले हफ्ते आएंगे तो यहाँ पे बदलूने पड़ेंगे। तो इस किस्म का एक माहौल है, कंप्लीट अपसेट। तो बेचारे यार गरीब लोग, अच्छा नहीं तो माहौल ये सारा जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चल रहे हैं। सर ऐसे ठीक तशरीह नहीं हुई ना। कम्युनिज्म ये है कि आप सोशली भी ख्याल रखेंगे लोगों का, उनको नीड्स भी पूरी करनी है आपने। नहीं, वो तो गवर्नमेंट का काम है। हाँ, उसका काम है, लेकिन और बहुत से तरीके हैं जो कर सकते। अब जो चाइना ने अपने आप को चेंज किया तो एवरी ईयर देयर पता नहीं आई फॉरगॉट 20 के 30 बिलियन ये सॉरी बिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। कम्युनिज्म में नहीं तो सारी पॉवर्टी से नीचे। तो एट टाइम्स थोड़ा सा वो इज्जत गैरत जो हम कहते हैं कि सबको बराबर होना चाहिए और नहीं। इसमें माय पॉइंट ऑफ व्यू के फिर इस्लाम हो, वो कहते हैं अल्लाह ने इसको दिया, इसको अल्लाह दे और लेकिन मुझे भी आता। कम्युनिज्म वाले कहते हैं इसको क्यों दिया, मैं सोचता हूँ ये मसला है, थिंकिंग का मसला है। अच्छा चलें, फिर एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैं सारी चीजें वो बता रहा हूँ जो रेल में हम आगे करेंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द डिसीजन टू हैव मोर ऑफ वन थिंग requires the decision to have less of another. मैं फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसके पास 10 रुपए, he's got 10 rupees. Now he wants a toffee which is worth 1 rupee. And then when he goes to the shop, he finds that there is a chocolate which is worth 2 rupees. Now when he sees that chocolate, he wants chocolate also, but he's gone initially for the toffee. So now he has to decide. He's got 10 rupees fixed. So either he can have 2 chocolates and 3 toffee. 5 chocolates. So 6 toffees or 2 chocolates. See? Either he can have 3 chocolates and then 4 toffees. Or have 5 chocolates and no toffees, but he wants a toffee also. So this when he says, okay, I will not have 2 toffees, but I will have 1 chocolate. So the opportunity cost of these 2 toffees is that chocolate. If he goes for that chocolate, that means he has lost this opportunity of having 2 more toffees. In the railway sense, if you have money, you know, you want to run a train. It is your choice to run a train, whether you want to run a freight train or you want to run a passenger train. तकरीबन कॉस्ट बराबर है, ये फिर आपने फैसला, उसके फिर बड़े मसले मसाइल जो आगे देखी है। तो ये once you make a decision that okay, I will go for a passenger train, आप शेख रशीद है, you would say let us have a passenger train, और बहुत बड़ा बड़ी बात है। So you have lost this opportunity of a freight train, which is a money earner, which will give you a return on investment. This is not going to give you a return. So ये opportunity you have lost it, and that is why the railway then goes into deficits. इसलिए आपको पता है, so this is the opportunity. Trade off होता है where इसमें opportunity cost के बराबर है, but you cannot have it all. Scarcity हर जगह पे, हर चीज आपको नहीं मिल सकती। 10 रुपए हैं या चॉकलेट मिलेगा या फिर वो मिलेगा। So you have to choose how to spend your money, time and energy. वो चीजें जो आप कह रहे थे ना, money is one, time is another thing, and energy is another. These decisions involve picking one thing over all the other possibilities. वहाँ पे opportunity cost का concept आ गया, इसको कहते हैं trade off. Where do you trade off? ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। How do they trade off and try to sort of facilitate the citizen
एजुकेशन में, हेल्थ सोशल सेक्टर में, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी में, कहाँ पैसे हैं स्केर्स। ये वाकई गवर्नमेंट के लिए बड़ा डिलेमा। We have already discussed it. This special kind of trade-off is called opportunity cost, value cost of the next best choice or the cost of one alternative. आप जो छोड़ दिए वो opportunity cost है और the value जो आप जिसके पीछे जा रहे हैं, and time, energy and money. अच्छा, very concepts हैं micro economics और macro. आप सुनते होंगे. Just to give you a broad picture, microeconomics is the detailed study of individual markets and interrelationship between markets, price, supply and demand. Economics, as I said, price, supply and demand. With economics. So when you're talking of individual thing, for example, when I talk of the cold drink market in Pakistan, I am talking of microeconomics. If I talk of the automobile industry in Pakistan, I am talking of microeconomics. तो उसकी क्या प्राइस है, गाड़ियों की क्या प्राइस है, कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स द बिहेवियर ऑफ ब्रॉड एवरेज क्या है, एग्रीगेट्स डिमांड्स और सप्लाई कैसी है, जनरल लोग मुल्क में क्या कर रहे हैं, उससे फिर आके इकोनॉमिक ग्रोथ और डिमांड किधर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ, टोटल आउटपुट क्या हो रही है, कंजम्पशन क्या हो रही है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी, इन्फ्लेशन कितनी है, ये सारे फिर इंडिकेटर्स हैं और ये इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हम चूंकि रेलवे में बात करेंगे सो वी विल बी टॉकिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन रेलवेज। प्रॉब्लम्स और डिसीजंस क्या होते हैं, एक तो जैसे एज आई सेड, क्या प्रोड्यूस, व्हाट शुड वी प्रोड्यूस, शुड आई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और शुड आई प्रोड्यूस टेक्सटाइल और शुड आई प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या करें, or should I produce automobiles or should I produce motorcycles? तो ये एक फैसला करना होता है, and how, और allocation resources तो आपके पास वही है, जैसे मैंने कहा ना regions, now you want to produce motorcycles and you want to produce it for a certain demand which is in the cities. I come up वो मुनीर आता है, कहते जी हम बड़ी गरीब लोग हैं, employment generate होगी, why don't you take this motorcycle factory to Fuzlar? Genuine demand, but should it be done? Economics says no. Wherever there's demand, उधर ही लोगों को वहाँ से आप लाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, मोटरसाइकिल महंगी होगी, सर इसमें एक सिंपल, फिर उसके लिए बिजली कहाँ से जाएगी, फिर आप कहेंगे पावर स्टेशन भी बनाओ, ये सारी चीजें ये देखनी पड़ेगी। सर तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, आप देखें आपके कंट्री क्या इंपोर्ट कर रहा है, जो भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पे आप प्रोड्यूस करें। दुनिया में अभी ऐसा नहीं। The world has become a global village now. You press a button, you don't press a button. You have this. You have to deliver the data. Border नहीं देखते हैं. So wherever you get it cheaper. इसमें फिर ये है कि आपने you have to decide who's going to make it. How can we compete with the other world, other people of the world, and in which commodities can you compete? आपके ट्रेडिशनल चीजें बहुत हैं। बस रॉ मटेरियल नहीं होता, हम किसी भी प्रोडक्शन साइड पे जाए तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं, वो तो एक और चीज है, वो तो स्केल्स, रिसोर्सेज भी आपकी स्केल्स, लेकिन जिसमें आपकी है ताकत, आप उस, मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारा इतना अच्छा खाना है, ये जो अल्लाह का फजल हमारी जो कढ़ाई है और बिरयानी है, जबरदस्त, एनीवन हु ईट्स इट वो कहेगा जबरदस्त, हॉट फूड है, सुबह में हॉट फूड। हमने इसको आजकल मार्केट नहीं किया, अब ऐसा ऐसा कुछ हो गया, और उसकी वजह भी है बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी सेटल्ड इन एरियाज, इंग्लैंड में हो गए, अमेरिका में हो गए, कनाडा में हो गए, शिकागो में हो गए, तो लोगों का वो टेस्ट चढ़ पड़ा है। अब यार, बट फॉर द पास्ट 60-70 years, stupid food like McDonald's and KFC and all this, जो cold food है, they were able to market their cold food. सलाद जैसे डाल दिए, टमाटर ऐसे रखी, उधर करके हम जाते हैं, and we were not able to capitalize on this. तो हमारे हैं strong points, लेकिन कैसे करेंगे that is another science. हम भी हम पीछे रह गए हैं,
वो बिरयानी और कढ़ाई भी इंडियन फूड के नाम से वहाँ। वही मैं कह रहा हूँ ना, हम आई डोंट नो व्हाट कोई मसले हैं हमारे। सर वो इंडियन खिलाए या पाकिस्तानी खिलाने कढ़ाई भी मुझे बिकनी चाहिए। नहीं खैर बिक जाए, इंडियन बिक जाए, लेकिन वो पाकिस्तानी है। मैं जब सेंट्रल एशिया गया ना, ताशकंद, समरकंद, बुखार, तो पाकिस्तानी जा रहे, तो एक पाकिस्तानी ना वहाँ चौक में खड़ा होता था और उसने 10-10 कोट लेदर के ना लगाए थे इधर कानों। और इंडियन आए, उन्होंने बड़े बड़े होटल बना लिए, उसके लिए स्कूल कॉलेज में बना दिया, कोई पार्क बना रहा है, टर्की आके कोई और चीजें बड़ी बड़ी कर, हम वही कोट उन्होंने दबा होगा तो 5 रुपये में निकाल दिए। ये मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है बहुत सी चीजें। खैर फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो गया, व्हाट इज कंज्यूम्ड एंड बाय whom, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड जो बात की ना, ग्लोबल विलेज है, ये आपको देखना पड़ेगा कि यार आपको सुई बनाने वाकई बनानी चाहिए, हमारे अपने रेल बनानी चाहिए। स्टील मिल है हमारे पास, शेख रशीद कहते हैं स्टील मिल सिर्फ रेल से ही चल जाएगी, हमारी रेलों से। और वो एक दफा इन्होंने स्टील मिल पे पैसा खर्च किया ना, इसने रेल का ऑर्डर भी नहीं दिया। थोड़ा सी बात है, मेरा ख्याल ये, व्हाई शुड वी बाय sort of have a construct steel mill for producing rail? हमारी इतनी डिमांड नहीं है। हाँ बहुत डिमांड हो, then you go and आपको होना चाहिए। स्लीपर ML1 में स्लीपर फैक्ट्रीज हैं, we had 4 of them, but not a steel mill. Steel is available all over the world. आप सस्ती लें, जहाँ से सस्ती मिलती है, why not? घी, गंदम, दालें, ये चीजें तो हम ये तो हमारे पास है ना, एग्रीकल्चर है, इंपोर्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ we are an agriculture country, we are importing cotton now. In Karachi, when I was there, we used to export millions of tons of cotton. Manchester पूरा ये अभी नहीं 150-year-old Manchester पाकिस्तान की कॉटन में चलता था। तो उसकी तो वजह है हमारे टेक्सटाइल से ज्यादा प्रोड्यूस करती है। नहीं लेकिन अभी कॉटन नहीं है ना, आपको पता है शॉर्टेज है, इसलिए इंपोर्ट करते हैं ताकि हम कपड़े ज्यादा बनाते हैं। नहीं कपड़े एक्सपोर्ट वो जो एरिया बना, ग्रोइंग एरिया वो कम हो गया, वो चीनी पे चले गए, शुगर मिल वाले कर रहे हैं। खैर वो जो इशू, लेकिन दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स। ये गवर्नमेंट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को तो ये हमारे स्पेशली जो रूरल एरियाज है, इधर जमीन को रेगुलेट करना चाहिए। घर बनाए जा रहे हैं, फ्री मार्केट से वो हट नहीं कर यहाँ पे पूरे एग्रीकल्चर लैंड है। चाइना में if you go there and you go to a village, there is a boundary for the village. उससे 1 inch पर they can't go and have and construct. He may be having acres and acres of land. He can't have his house there. He will have it in that compound. अब what they are doing is they are going high rates. उन्हीं villages में high rates है, but not affecting the, इधर तो हमारा हाउसिंग सोसाइटियां बनती जा रही हैं। हाँ बड़ा बुरा हाल है वैसे फ्रैंकली, स्पेशली जीटी रोड पे, और जहाँ रोड गया वहाँ सोसाइटी, ये मैं इस रोड से आता हूँ, खानपुर टेक्सला रोड, इस पे भी हाउसिंग सोसाइटी शुरू हो। So then how much unemployment and inflation, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर की वैसे ये करनी है कि जब आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया वहाँ पे ये मतलब इकोनॉमिक वही जनरेट हो रही है, बड़ी अच्छी है, आपकी रेगुलेटेड हो, शिफ्ट हो रहा है, मतलब है फर्ज करें हम एग्रीकल्चर से किसी दूसरी वो उसकी तरफ जा रहे हैं, सेक्टर की तरफ, बिजनेस डेवलप हो रहा है, पैसे जनरेट हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि रेगुलेट हो, आपको मार्क होना चाहिए कि यार ये जगह जो है एग्रीकल्चर की है, तो कल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थोड़ा आपके पास महंगी है। कल पता है टमाटर कितने का? आई डोंट नॉर्मली डोंट डू दिस, लेकिन ये लेक्चर के लिए आ रहा था, मैंने पता करूँ नहीं, वैसे ही मैंने वॉक पे गया था, मैंने कहा पता कर 250 प्लस है, 280 रुपए पाकिस्तानी ईरानी नॉर्मल टमाटर। मैं पिछले संडे को गाँव गया था, 50 रुपीज का किलो, शुक्र है हम 10 किलो ले आए। मेरी वाइफ कह रही थी क्या करना है इसको, ये करना, मैं क्या खैर ले ले, इतने खूबसूरत है ये you couldn't cross that. Then inflation. But now unemployment or inflation, keep this in mind, economics में this affects the common man. He is not bothered कि डॉलर का रेट किधर जा रहा है और लॉटरी चीज किधर चलेगी, वो कहते हैं यार इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, मुझे डॉक्टर नहीं, मजदूर बैठा हुआ काम, ये नहीं होगा। दूसरा
कि आपकी चीज महंगी नहीं होनी चाहिए, ही शुड बी एबल टू बाय। अब इट इज बियॉन्ड इट वेरी वेरी। तो ये बताएं 280 रुपए पर टमाटर कैसे लेगा? नहीं, और पहले टमाटर के साथ रोटी खाता था, रोटी होगी 15 रुपए, 15 भी है कि नहीं, ज्यादा है। तो ये चीजें दो फैक्टर्स हैं। ये जो आपको कोई कहता है ना ट्रेड डेफिसिट ऐसे है और करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसे है, वो क्या है, इसका कोई आदमी कॉमन आदमी का नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंस के और अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स हैं। तीन चीजें हैं जो इकोनॉमी में वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। नंबर वन इज कॉमन मैन के लिए इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज होनी चाहिए मार्केट में। देन असल चीज जो है इकोनॉमी में इज द ग्रोथ रेट। If a government cannot increase the growth rate of the economy, that means it कुछ नहीं कर। Economy is not growing. At least मेरा अपना ख्याल ये कि ये पाकिस्तान की economy should be growing at not less than 7%. और पिछले हम 2-3 साल में अपनी 2 पे गए थे, कोई कहता है 0 माइनस भी चले गए हैं। कोरोना की वजह से इकोनॉमी तो यार जो भी है, अभी तो 5.6 पे है। I don't know. खैर से इसको जाने दें, पता चलेगा। कल परसों फिर चला गया। इकोनॉमी रोकी स्पेसिफिकली करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस की करके कुछ लाएंगे। उसको तो मैं क्या करना है यार, करंट अकाउंट मैं बेटी टाइम नॉट कंसर्न होना चाहिए। वो इंडिकेटर्स हैं, वो चीजें आप उसको कंट्रोल करोगे तो चीजें होंगी, बट दोज आर द मैकेनिज्म जो अंदर से हैं। इट इज नॉट अफेक्टिंग द कॉमन मैन। क्या कौन सी चीजें इम्पोर्ट, अब आप लग्जरीज इम्पोर्ट करते हैं, प्रोडक्टिव चीजें नहीं करोगे, कॉमन सेंस की बात है, प्रोडक्टिव चीजें आएंगी, इकोनॉमी प्रोड्यूस करेंगी। मुझे तो कम से कम नजर नहीं आया कि यार कोई नई चीज, कोई नई फैक्ट्री खड़ी गाड़ियां रियली आई कांट फाइंड, बंद हो रही है, दबा के बंद हो रही है। सीपी ने कहा है इसमें कोई एवरेज पे 5 लाख जो है इंडस्ट्री रजिस्टर हुई है उनपे एनुअली। क्या हुई? इसलिए है हमारी एससीसीपी वहाँ एससीसीपी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 लाख एनुअली नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है इस गवर्नमेंट में, जो पहले कभी नहीं हुई। वो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, वो मैंने कभी नहीं की, मैंने कभी बना सकता, वो रजिस्टर होगी, वो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी है, लेकिन फिजिकल ग्रोथ रेट के लिए आपको कोई और चीज जरूरी है। वो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, वो फिर आपको इन्फ्लेशन डाउन करती है, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ती है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। मानी नहीं पड़े, अभी कल आप देखें बात भरा हुआ है, आपका ट्रेड डेफिसिट है कितना चलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ी है सर, 38 बिलियन प्रोजेक्ट बढ़ना इन रिलेटिव टर्म्स कि आज आपने 10 चीजें एक्सपोर्ट की, कल आपने 11 कर दी, एक बढ़ गई, लेकिन इट इज नॉट इनफ। कितना होना चाहिए, वो तो ये तरीके से हमने इंक्रीज कर दी, क्या बात नहीं है। जैसे ये रेलवे वाले हम कहते हैं ना कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, हाथ बढ़ गया, तुम्हारा डॉलर तो 185 पे चला गया, तुम कहते हो कि मैंने पिछले साल 40 बिलियन कमाया था, इस बार 42 बिलियन कमा रहे, तो टिकट बढ़ा दो और बढ़े। तो इन रियल टर्म्स वी हैव गॉन डाउन। सर इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में बढ़ती है, उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस लिहाज से इतने, लेकिन जो मैटर करते हैं वो बाइंग पावर के साथ। हाँ, बाइंग पावर तब आती है जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा। बाइंग पावर ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और बाइंग पावर पर बढ़ेगी। इन्फ्लेशन आपकी बात सही है। अब ये टर्की में एक जमाने में 300-400% इन्फ्लेशन है, वेनेजुएला के लिए, सॉरी वेनेजुएला नहीं, ये क्या है जो फुटबॉल पे, अर्जेंटीना में गया, उधर इन्फ्लेशन उस दिन मुझे पता चला, एम्बेसडर साहब ने कहा कि इधर इन्फ्लेशन है 500%। सारे शॉक जमाने में मुझे इतना नहीं पता। 500% बिल्कुल। कल फॉर एग्जांपल एक चीज 1 रुपए की तो आज 500 रुपए की, ये एग्जैक्टली हमारे साथ हो रहा है। टमाटर 50 का था, आज 280 का। वो तो रमजान, ये कितना परसेंट हो गया? वो तो रमजान की बरकत है, हम लोग रमजान में थोड़ा सा हमारा मुसलमान है, जबरदस्त काम है। हमारा डिमांड सप्लाई का उल्टा है, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस हाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है हमारे यहाँ। नहीं, वैसे वो वैसा नहीं होता सर, जहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है वहाँ प्राइस कम हो जाता यहाँ है। रमजान है ना, न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल, कनाडा, चीजें सस्ती हुई। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, यूएसए में ऐसा नहीं होता है। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, न्यूजीलैंड में।
अच्छा, फिर आपकी प्रोडक्टिव, ये जो मैं कह रहा था ना, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है? असल चीज जो नीचे है ना, इकोनॉमिक, ये बॉटम है बस। वो कैसे आप करते हैं, क्या नहीं करते, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जहाँ पे नहीं है, ये सब बाकी बातें हैं। कमोडिटीज नहीं है, कमोडिटीज भी नहीं है और कीमतें भी बहुत। आप अल्लाह का शुक्र करें दैट वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, एंड अगेन इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट ने इसका, वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने इसका नोटिस ले लिया, तो जिस दिन इसका गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया, तो ये अल्लाह का बड़ा फजल है। मांग लेते हैं, आप थोड़ा खटक में जाए, आप शोर में जाए, नवाबशाह में जाए, मार्केट्स में चीजें मिलेंगी। केला भी मिलेगा, माल्टा भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा, और प्याज भी मिलेगा, और आलू भी मिलेगा। शुक्र करेंगे मिलेगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं लिया। तो ये जो मैं बता रहा था कि जो पहले टू प्रोड्यूस एंड हाउ कंज्यूम बाय होम, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर की चीजें हैं कि क्या खाना है एक सेक्टर में, कौन सी चीज। प्लानिंग के अंदर आएगा नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। नहीं सर, वैसे ओवरऑल इकोनॉमिक उसमें ये सब मिनिस्ट्रीज का इसमें कंट्रीब्यूशन, यू कांट टेक एनीवन आउट, लेकिन फाइनल डायरेक्शन आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्लान और सारे प्लान को चॉप आउट, वो प्लानिंग वाले जो है वो फिर डेवलपमेंट चीजों को प्लान करते हैं, वो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करते। 3 और 4 आइटम्स, ये जो हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बड़ी चीज है। ये चूंकि एग्रीगेट चीजें हैं, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। टोटल आउटपुट कितना है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, प्राइस लेवल्स क्या हैं, ये खैर वो इट्स अ लॉन्ग थिंग। अब फॉर एग्जांपल पूरा महकमा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, पूरा मिनिस्ट्री है, डिवीजन है पूरा, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वहाँ जाए तो आपको पता चलता है कि क्या क्या है। फिर वो देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, और उससे फिर इन्फ्लेशन करते हैं, लेकिन नॉर्मली सप्रेस्ड होता है। दूसरा वैसे मान हाथ मारता हो तो कम कर अच्छे लोग। इसी तरह हम ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इसको भी हम आगे पीछे करते हैं। जब कोई यूएन से आ रहा होता है, कभी बैठ के कहती है कितना करें, या कितना करें, जो है वो बताओ आप। तो अगर 2 है तो कहते हैं अच्छा यार चलो 1.9 करो, इट लुक्स बेटर। तो ये होता है एक्चुअल मीटिंग में, ग्रोथ रेट में होता है। ग्रोथ रेट में तो मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, 4-5 दिन सफर कर लो, अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी फिर आपको पता चलेगा ग्रोथ रेट। अगर अभी इलेक्शन आने हैं कैसे आएंगे, जो भी है बीच में पता चल जाएगा ना। अब तो लोग अभी मुंह खोलना शुरू किया। कल अलीम खान को सुना आपने, और वो गवर्नर साहब को सुना, इकोनॉमिक सिस्टम्स ये हमने पहले कर ली है। कैपिटलिज्म मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इसमें फ्री मार्केट है और थिंग्स आर ओन्ड, अगेन वही चीजें। सोशलिज्म ये हमने कर ली है। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की बात है कि प्राइवेट सेक्टर में कि पब्लिक सेक्टर, और डिसीजन प्रोसेस ये कौन करता है, मार्केट बेस्ड है कि कमांड बेस्ड है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली, और ये भी हमने कर ली है। लेकिन ये मिक्स्ड इकोनॉमीज में हर मुल्क में डिफरेंट मिक्स है। यू कांट से कि ये पाकिस्तान में अपना होगा, चाइना में अपना है, अमेरिका में भी है। इट इज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी, लेकिन कितना है और कितना नहीं है वो फिर डिपेंड्स। ये भी बिहेवियर पे डिपेंड करता है। हाँ, एवरी कंट्री विल हैव इट्स ओन, एंड देन ये चेंज करता रहता है, डायनामिक है। ये नहीं है कि जी मैंने ये 70 पे रखना है, तो ऐसा चेंज होता रहता है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। चलें, ये फाइनल देख लें कि ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू इकोनॉमिक्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके ज़हन में होने चाहिए कि वेरिएबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। वेरिएबल्स जितना आप वेरिएबल्स डालेंगे उतना चीज जो करेगा उतनी चीज कॉम्प्लेक्स होती है। अब तो साइंस के लोग हैं, असम्पशंस बड़ी जरूरी है। ML1 बनाते हुए हमने बड़ी असम्पशंस की। अब आप कहें कि ये असम्पशंस कैसे की हैं, क्यों की? एक असम्पशन से पूरी इकोनॉमिक्स चेंज हो जाए। मैं कहता हूँ मुझे चाइना लोन देगा एट 1.5%, क्यों देगा? मोटरवे को NHA को 2.3% देगी।
तो फिर बंदा कहता है कि यार ये जो assumption मैं कर रहा हूँ अभी तो मेरा प्रोजेक्ट आया नहीं, I have to go and show it to the banks. Exim Bank चाइना को दिखाना है, बाकी पाकिस्तान में दिखाना है कि यार ये। Then in ML1 we decided कि यार चलो हम नहीं कम assume करते, हम highest level पे जहाँ पे ऑरेंज लाइन को और मोटरवेज को जो लोन हमने दिया है वो हमने assume किया कि 2.3 के ऊपर है। तो ये assumption बड़ी सही कैलकुलेशन 2.3 पे है, लेकिन मेरी फुल कन्विक्शन है कि 1.5 से कम। If they play their cards well, ऐसे ही चलेगा शहर के लिए तो वोट नहीं बढ़ेगी। शरद की डिलेज क्या है उसमें इस वक्त? 8वां साल है शर्म की बात, वो चाइनीज चले गए, सो गए, वो कहते हैं ठहर जाओ।